अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास 3 है, तो क्लास की तरफ जाने से पहले कुछ बातें थी वो मैं आपको बता दूं। जिस तरह की क्लास जो हमारी आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास ट्यूसडे वाले दिन होनी थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से क्लास जो है ट्यूसडे को ना हो सकी और क्लास आज जो है वो लेट हो रही है। तो अब थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का जो शेड्यूल है उसको शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। पहले वीक में 2 क्लासेस हमने रखी थी, लेकिन जो है हमारे इंग्लिश के जो सर हैं, सर इस्माइल, उनकी अदर्स क्लासेस भी होती हैं और कोचिंग्स भी होते हैं, तो वहाँ से उनके लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब हमने वीक में 1 क्लास कर दी है, तो उसका जो न्यू शेड्यूल है वो आप लोग को आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया गया है। और इसके अलावा क्लास की वीडियो वॉच करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में स्टार लाजमी दें, और जो असाइनमेंट आपको मिलता है असाइनमेंट आप वो लास्ट में सबमिट करवाएं। जो 3 कोर्स तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएगा तो उस स्टूडेंट को इस कोर्स से लेफ़्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आइए चलते अपनी क्लास की तरफ। Hello, assalamu alaikum guys, and my dear friends, you are well, fine. So I'm very happy that you have come to take my second class of parts of speech. Today I will teach you the second part of speech. Now look at the blackboard. Parts of speech. The second part is pronoun. It is used in place of noun. In place of noun. For example, you say Akil. Akil goes. Akil plays. So you can write like this: Akil goes and he plays. So he is pronoun. I, you, we, he, she, they. Understand? You have understood clearly? Okay? Now you look here. Third is verb. Verb shows an action. As I run, he eats. She writes a letter. In these sentences, run, eats, and writes, they are showing something. They are showing action. So these are called action words. It is clear? It is very easy. There is no difficulty. If you look here, adjective. Adjective describes a noun. As Ali is a good boy. Shan is smart. Johnny is tall. Good, tall, and smart. These words are adjective because they are showing, they are describing a noun. You say that my name is Shan. I ask you, how is Shan? So you say Shan is well, Shan is healthy,
Fawaz is intelligent, Moise is expert. So these words are called adjective. Adverb. You know very well, adjective describes a noun, so adverb describes a verb. It describes a verb. She drives car slowly. So slowly is adverb. He speaks softly. So softly is adverb because they are describing other one. Is it clear? Preposition. It is used before a noun. Before a noun to show relation. You say he is on the horse. Suppose if you don't use on, so it means he is the horse. यानी वो घोड़ा है. He is on the horse यानी वो घोड़े पर बैठा हुआ है. So it shows the relation. The cat is dash the table. Is very clearly always the cat is under the table. So on, under, in, to, by, of, with, these are all preposition. Conjunction. It joins two sentences. For example, Ali and Shan, close friend. I will eat butter, but not bread. So but. So the words which join and, but, so, these are called conjunction. Now you will learn the last part of this speech. It is called interjection. Interjection. It shows a sudden feeling of happiness. Love, hate, or surprise, or sorrow. Hooray! We won the match. Alas, he lost his bike.
So these are called interjection, and it also applies the sign of exclamation like this. Oh my goodness. Etc. Okay, it is clear. So all parts of speech you have learned from 1 to 8. If there is any problem, any difficulty, so you can ask me and you can call me. Should I close the class? Okay, thank you.